The moment to introduce our guest for today. So we have PV Subramanyam sir, founder at Subramani. He's an author, an educator. He also runs a YouTube channel wherein he being a chartered accountant who understand numbers and he also love to tell stories. So basically you'll find a mix of that on his YouTube channel and that is very insightful. He also actively write blogs which are very beneficial for every financial market participant. And in initial 17 years of his career, he spent time number crunching, first as an auditor, then as an equity broker, mutual fund advisor, and corporate finance advisor. And in his second stint or second career as a trainer, educator, and author, which is still on for over 19 plus years. As a professional trainer, he trains a lot of people, be it corporate employees, promoters, non-finance managers, fund managers, entrepreneurs, life insurance agents, and whatnot. He has written books. He also conduct workshops. He has written so many columns in leading newspapers, and he has also appeared as an expert speaker on various business channels. A very warm welcome, sir. Just in case I missed anything on your introduction, I would request you to suffice when we ask about, sir, how it all started for you and how it has evolved over a period of time. स्टार्ट कर दें क्या? I am fine unless Yes, you sir. want to. Yes, sir. Yeah, we can, sir. Yeah, please. Okay, I started investing very young, maybe 1979, which means I was in class 12. And slowly it started, obviously, class 12 till I finished CA, it was father's money, then it was my money. But from 79 till now, which is what, 44 years of investing, मैंने कभी अपना शेयर बेचा नहीं है. मतलब if I have sold, it is to buy something. Right? I have not sold to buy a motorcycle, buy a car, buy a house, or anything of that sort. It is only investment and reinvestment. Right? That is a very important thing in investing, not selling in desperation. I mean, you will sell, but you should sell from a position of comfort, not from a position of distress. So, obviously, I had to do some पढ़ाई तो करनी थी. तो सीए किया, सीए करके प्रैक्टिस स्टार्ट किया. प्रैक्टिस वाज गुड, बट प्रैक्टिस वाज बोरिंग कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स. So I came to the equity markets, became a sub broker. From sub broker, I became main broker. Somewhere when I was 39, I decided my dividend income was greater than my expenses. So I said, चलो अभी क्या नौकरी और कितनी देर नौकरी करनी है, तो नौकरी नहीं किया. I mean, नौकरी नहीं, that was doing business. Then I said, okay, I will do training. फिर training किया. And I still continue to do training. I continue to do training because I enjoy doing training. बहुत मजा आता है, इसीलिए training करता हूँ. That's where I am. That's great, sir. So you have seen the Indian share market grow from a very nascent stage. So, sir, I would request you to how it has evolved over a period of time, and apart from some experience from maybe your father, any other link to financial markets, sir? Maybe in the beginning. Not even my father. My father was working in a company. He had money to invest, but he was not a market person. But yeah, he bought some shares even before I was born. But largely our family's entry big time into equities after I reached class 12. So yeah, now we're talking of 44 years of experience. Yeah, that is the market for me. Great, sir. So, sir, for any investment, how it start for you, be it from idea generation to due diligence, and finally coming to a point where you think this and that company is investable or this is not? I don't know about MBA class जैसा लगता है, you know. It's not always so bookish. You pick up a share, you pick up an industry, and you say, इसका market share बढ़ेगा क्या?
Will people use these services? Will they use it for a long period of time? 10 साल बाद लोग यही शैम्पू यूज करेंगे क्या, यही टूथपेस्ट यूज करेंगे क्या, ये सर्विस यूज करेंगे क्या? Then you say, okay, this is a good buy. So recent examples which I have bought should be something like Indigo and Zomato. My logic is very simple. This is a new service. I can't say अरे मैं Zomato use नहीं करता हूँ तो कोई use नहीं करेगा. There is a big generation of people who will use Zomato. Everybody anyway uses Indigo. Indigo has got 63% market share. So yes, sometimes it will happen that the oil prices are up or something like that. But given the fact that they have market share, they will be able to pass on the price rise. So their margins will get protected. I don't think that is something to worry about. So I have been able to I'm building a position in Indigo and in Zomato, which are the new ones. I mean, old ones I would still, I look at Colgate, bought in 1977, and say, have people stopped using toothpaste? If the answer is no, why should you sell Colgate? मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है. Why people look for a new share every day? मुझे साल में 2-3 शेयर्स की जरूरत पड़ती है, लोगों को हफ्ते में 4 शेयर की जरूरत पड़ती है. Why do you need so much? So that's been my logic. That's pretty simple and I mean too tough to follow, I must say. And like sir, I mean holding on to your investment for so long, it takes a great strength, come courage. So how had been your experience with that? Didn't you ever get any urge to sell your positions when they grew to a handsome, maybe multiplied? No, tell me one thing. Does it make sense to sell HDFC Bank to buy Yes Bank? To me, it never made sense. Or sell a Colgate to buy Patanjali. Patanjali लेना है तो अलग से लो. Colgate बेच के Patanjali लेने का क्या मतलब है? Why should you sell? There has to be a reason to sell, right? Unless I don't have money, I get a new idea which is much better than the old idea, then I should sell the old idea and buy a new idea. Sorry. So if I think Colgate is not a good share and Patanjali is going to get better market share, then I should sell Colgate and buy Patanjali. मुझे लगता ही नहीं है कि Colgate का भी टाइम खत्म हुआ है, या एशियन पेंट्स का टाइम खत्म हुआ है, या एचडीएफसी बैंक का टाइम खत्म हुआ है. तो पकड़ के रखो ना यार, वो बेचने का क्या मतलब है? आई डोंट फाइंड द लॉजिक दैट इट शुड बी सोल्ड. सो सेलिंग आ सकता है. आई मीन देयर हैज टू बी अ रीजन कि कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, कंपनी इज डूइंग स्टूपिड थिंग्स. और सडनली अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो आई डिसाइडेड कि मुझे वो तंबाकू वाली कंपनी में नहीं रहना है. सो आई सोल्ड ऑफ आईटीसी. I sold off ITC at a good price at 330 के आसपास, and I put that money in Siemens. Siemens is done better than ITC. बट मैं आईटीसी अभी वापस नहीं लूंगा कोई भी भाव में. मुझे आईटीसी नहीं चाहिए बिकॉज आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट बी इन अ टोबैको कंपनी. दिस इज नथिंग टू डू विथ आईटीसीज बैलेंस शीट. दिस इज माय पर्सनल डिसीजन. सो आई हैव नो रिग्रेट के आईटीसी वापस 350 हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया, जो भी होना है होगा, मुझे नहीं चाहिए. सो दैट इज अ रीजन टू सेल. और यू से ओके ये शेयर का भी टाइम खत्म हो गया, अभी ये बेचो, नया कुछ लो. सो देन इट्स अ डिफरेंट. बेचने का when we were brokers, we used to call them voluntary contributors to the broker welfare fund. They used to just come to give us brokerage. बोलो चलो आओ बॉस, बकरा बनो, हमको क्या है. So they used to come, they used to give us brokerage and go. हमको कोई आपत्ति तो नहीं है. Right, sir. But sir, the entry, I mean, you rightly said, but again, when you enter a business, your entry matters, right? But again, over a period of time, these names which you just spoke about are considered in a category of consistent compounders. But people are like gungo about finding, as you were rightly saying, people need 4 or 5 stocks ideas on daily basis, and they are more. I mean, rather than focusing on the portfolio return, people are more about finding multi-baggers. But since the new participants doesn't have experience which you carry, so how they can condition their mindset so as to like ignore the noise and make smart choices? So 1979 में मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं 17 साल का था. बट प्रॉब्लम यह है कि सबको उतना उछलते हैं ना, हर रोज कुछ तो चाहिए. एवरी डे दे वांट समथिंग न्यू. ये अमेजोन की आदत है, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ. तो और देखो तो यू विल मेक मनी फॉर द ब्रोकर, यू विल नॉट मेक मनी फॉर योरसेल्फ.
How people should do it, I don't know. People should not be doing investing full time. डॉक्टर्स एंड मेनी पीपल नौकरी छोड़ के बोलते हैं फुल टाइम इन्वेस्टर बनेंगे. फुल टाइम इन्वेस्टर बनोगे तो मरोगे. दैट्स गारंटीड. यू हैव टू हैव सम अदर वर्क टू डू. I mean, today I'm doing training not because I need the money, but because I don't want to full day sit at home and watch what is happening. For example, today I did not even log into the market, right? I had a Ganesh Puja at home. I sent you the photograph also. Then I had gone out. मैंने तो आज लॉग इन भी नहीं किया. ये हर रोज देखने की क्या जरूरत है? क्या हो रहा है तुम्हारे लाइफ में? कोई जरूरत नहीं. मुझे कभी लगती ही नहीं है जरूरत. एंड देखना भी है तो मैं जाके अपना टोटल फिगर देखता हूँ, खुश हो जाता हूँ, और फिर दैट्स ऑल. आई डोंट सी how each share is doing. राइट सर. सर एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में भी ओपिनियन डिवाइडेड रहता है, इन द सेंस पीपल बिलीव कि एक बेस बनाने के लिए ट्रेडिंग मैंडेटरी है. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू सी इट डिफरेंटली? हमारा रेगुलेटर को भी पता नहीं है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अलग है. जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, और ये मार्केट ऐसा है कि पहले प्रॉफिट दे भी देता है. 200 का प्रॉफिट, फिर 3000 का प्रॉफिट, फिर 5000 का प्रॉफिट, फिर 20,000 का प्रॉफिट, फिर 1 लाख का लॉस. पूरा जो प्रॉफिट है वो साफ हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग हैज टू बी लर्नड. यू कांट जस्ट से आज से मैं ट्रेडर हो गया. आई मीन यू डोंट से ना आज से मैं डॉक्टर हो गया, आज से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आज से मैं लॉयर हो गया. You go through an education, you go through training, then you become a professional. Trader means nothing. Trader means you have to have some skills, you have to understand something about the market. कुछ समझ में नहीं आता है, वो बंदा 2-4 चीज खरीदता है और बेचता है और उसमें प्रॉफिट हो जाता है तेजी में, तो अपने आप को ट्रेडर समझने लगता है. That is not a trader. These are time pass characters. They are lovely people. They come and give a lot of money to the brokers. That's all. They don't make money. But आजकल people think that they make money, so I can't stop them from thinking. So, I mean, sir, initially the ticket size when we start investing are comparatively very small, and people believe everybody has expectations on their end. So, what would be your suggestion on that front? How one can like gradually build wealth over a period of time and curb the urge of multiplying the money overnight kind of thing? First of all, I don't know who tells people that they can overnight build wealth. ये होता नहीं है. लोगों को कहीं से भ्रम हो गया है कि ऐसे हो सकता है. नहीं होता है. सचिन तेंदुलकर को भी 24 साल लगा अपना कैरियर बनाने में. 16 साल में स्टार्ट करके 40 साल में खत्म किया, बट इट टुक हिम 24 years टू बिल्ड दैट कैरियर. पोर्टफोलियो बिल्डिंग टेक्स टाइम. इट कांट बी ओवरनाइट के आपने 10 रुपए का शेयर लिया, अपने सोमवार को लिया और शुक्रवार को वो 200 रुपया हो गया. नहीं होता है. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बिल्ड वेल्थ. So even if you take something like an HDFC Bank or a Colgate, it would have given only what 12, 13, 14%, maybe 18% return. That's what it gives, but it gives over 30 years. So I'm an original shareholder of HDFC Bank. I'm an original shareholder. In fact, I bought HDFC Limited below par. 100 rupee share, I got it at 97 rupees. Then you look at it every 3 months, 6 months, 8 months, 1 year, and say, boss, ये बेचने का कोई कारण ही नहीं है, तो क्यों बेचूं? So अच्छा शेयर है, अच्छी कर रही है, तो I can't understand. I don't have any reason to sell my portfolio. I got shares which have been holding for 30, 40 years, 20 years. I may trade in them. अगर मेरे पास कोई शेयर 30,000 शेयर है तो मैं उसमें 500 में शेयर ट्रेड भी कर लूं. बट ओरिजिनल बेचने का कोई कारण ही नहीं. कभी बीच में लगता है वो द प्राइस हैज गॉन अप टू मच, सो आई शुड सेल. आई सेल, देन व्हेन इट कम्स ऑन आई बाय इट अगेन. इफ द प्राइस डजंट कम ऑन, बैड लक. 30,000 में से 500 गया तो 29,500 है ना, पूरा तो बेचा नहीं. सो व्हाट पीपल शुड डू इज फर्स्ट क्रिएट अ पोर्टफोलियो. गो एनीवेयर एंड क्रिएट, मेंटली क्रिएटेड अ 10 लाख का पोर्टफोलियो. Maybe you're investing only 1 lakh. एवरी मंथ बिल्ड करो ना उसको, स्लोली बिल्ड करो कि भाई ये मेरा एम है कि मेरे पास 1,000 कोलगेट होना चाहिए. अभी मैंने 10 खरीदा, फिर मैंने 20 खरीदा, भाव नीचे आ गया, फिर मैंने 30 खरीदा. अरे भाव ऊपर चला गया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं खरीदा, फिर भाव नीचे आया, मैंने 40 खरीदा. आपका तो एम है ना 1,000 तक पहुंचने का, तो जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक व्हाई आर यू गेटिंग टेम्प्टेड टू सेल? The question to ask is, will people use toothpaste in India over the next 20, 30 years? Will more people use? Yeah, so fine, but
Going by the same logic, Colgate has made money, but Gillette has not made money. Same logic, everything. कभी Gillette में पैसा नहीं बना. So अपनी तरफ से देखो कि 4 साल 5 साल हुआ कुछ नहीं हुआ तो फिर बेचो ना. ऐसे 2 2 महीने में बेचते रहोगे तो फायदा क्या होगा? How will you build? To build a tree, it takes time, right? अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो 7 साल लगता है ना फल आने को. आप हर रोज उसको खोद के देखोगे कि भाई उसका क्या हुआ है. Is the water going to the roots? Then the roots will never get built. And sir, when it comes to like investing in companies, so you believe in concentrated kind of investing, or you believe well one should be well diversified? How good money should be made? यार ये सब बहुत बुकिश पूछ रहे हो. कोई इन्वेस्टर ये सब सोच के नहीं करता. Right? When I bought Colgate, I didn't know how much of Colgate I will continue to hold. When I bought Reliance, I did not know when I will sell Reliance and buy Reliance. In my portfolio, I don't even know what is the concentration of which industry. Right? I don't even analyze all that. I go bottom up and say, okay, ये कंपनी अच्छा करेगा और next 10 years, 15 years तो मैं इसका शेयर लेता रहूँगा. तो मैंने टाइटन ओरिजिनल भी है, बाद में भी खरीदा हुआ है, बेचा नहीं है. सिमिलरली यू बिल्ड पोजीशन. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ये क्वार्टर में फार्मा चलेगा कि सीमेंट चलेगा. अगर अच्छा कंपनी है, आई मीन अगर अच्छी कंपनी है, सन फार्मा, my best Sun Pharma bet would have been, I must have bought it 100 rupees, and the worst price I must have paid for it could be 1200 rupees or 1150 last week or something like that. अगर बेचना नहीं है तो खरीदना है. खरीदना है तो यू कीप लुकिंग एट द प्राइस एंड से ओके इसका मार्केट शेयर है, अच्छा है तो खरीदो. इट्स ऑल ना. व्हाट, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट एनीथिंग एल्स? फर्स्ट बिल्ड अ पोर्टफोलियो. हाँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करने नहीं आता है तो पूरा इंडेक्स को कॉपी करो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री परसेंटेज. So if 10% of the index is technology, you say I will not go to 15% of technology. मेरे पास कोई कारण नहीं है उतना टेक्नोलॉजी खरीदने का. तो मैं एनबीएफसी खरीदूंगा, मैं बैंक खरीदूंगा, मैं फार्मा खरीदूंगा और मैं आईटी भी खरीदूंगा. बट मैं इन्फोसिस टीसीएस नहीं खरीदूंगा. मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स खरीदूंगा, मैं कुछ एचसीएल खरीदूंगा. मतलब इंडस्ट्री में 15% होगा या 12% होगा, बट आई मे बाय डिफरेंट कंपनीज. But you cannot go overweight on any particular industry and get beaten very badly. So if I like banking, I look at it as financial services. I don't look at it as banking. So if I think banking is now fully priced, I may look at asset management companies, I may look at insurance, I may look at credit card issuers, I may look at stock exchanges, I may look at registrars. ये सब BFSI के हैं. So I will buy within that BFSI thing, but I may be underweight in banking and overweight in insurance. ये हो सकता है. So overall you have to have some sense, but मैं बैठ के exactly गिनता नहीं हूँ that oh I should be only 12% in BFSI. ऐसा कुछ नहीं है. If I like a good share, like say if I like Cholamandalam, again 1986 का first purchase है. But I've never sold. I've always kept buying. I've added more. अगर मैंने बेचा है वो कवर करने के लिए बेचा है. मैंने इसलिए नहीं बेचा है कि मुझे वो खर्च करने के लिए पैसे चाहिए. Like we all have influence of family and friends in our investing. So iske kya, I mean, what pros and cons you see, and what all things need to be kept in mind while like taking advice from friends and family? If your family has never invested in equity, then it is going to be very difficult. Because during bad times बहुत ताने मारेंगे, अरे देखा मैंने बोला था पीपीएफ में ज़्यादा पैसा बनेगा, और वो सब आपको थोड़ा बहुत गाली सुननी पड़ेगी. वो सुनने की ताकत नहीं है तो मत करो, या घर वालों को मत बोलो. दैट इज द चॉइस दैट यू हैव. बट इफ योर फैमिली हैज बीन एन इन्वेस्टर, देन यू आर लकी. If your family is not an investor, बीच बीच में when equity markets are doing well, थोड़ा पैसा निकाल के take them to a 5-star hotel for dinner or something like that, ताकि उनको लगे हाँ भाई इक्विटी में कुछ फायदा है. You have to teach them, and that's not going to be very easy. But don't invest your father's money and that kind of a thing. Don't start taking risk with your family money. That would be disaster. Right, sir.
And so we all know asset allocation is very important. So, I mean, what would be your advice on that? I mean, not on the bookish front, but again, how you do it for yourself. I mean, it's more inclined towards equities, or I mean, you also have investment in other asset classes as well. I am 90% in equities, almost always. But that 10% is enough for me to live for another, say, 10 years because मेरा dividend income will be greater than my expenses. तो मुझे एसेट एलोकेशन की जरूरत नहीं लगती, बट डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल, see, look at it this way. Suppose there is a trader but his wife is a doctor and she has got good income, then he can afford to take more risk because wife's income is like a short return. वो practice तो चलेगा ही, उसमें पैसा आएगा. और let's say she is a professor at IIT, तो वो इनकम तो गारंटीड है, वो नौकरी नहीं जाएगी, या सरकारी नौकरी है तो वो नौकरी नहीं जाएगी, तो शी विल कंटिन्यू टू अर्न. देन द हस्बैंड कैन टेक लिटिल मोर रिस्क विद हिज पोर्टफोलियो बिकॉज यू हैव टू सी एसेट एलोकेशन ऑफ द फैमिली, नॉट जस्ट ऑफ द husband or the wife separately. So if one person income fluctuates and the other person has a steady income, then your risk taking ability is higher. So you have to see your job, your age, the total amount of money you have, the money that your parents have, the money that your wife has, the money that her parents have. ये सब मिला के देखो कि क्या हाल है. Based on that, you take risk. But if you are a businessman, obviously you should not be taking risk in the equity market क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजनेस पे तो रिस्क ले ही रहे हो. सो ये सब देखना है कि आपकी, और जिसके पास बहुत पैसा आ जाता है, किसी के पास समझो 500 करोड़ है, वो फिर एसेट एलोकेशन नहीं करता है. Sir, one question is around where should one ideally park their emergency fund? बैंक में रखो यार, दैट्स गुड इनफ. कोई जरूरत नहीं है बिकॉज टुडे एवरीथिंग इज बीइंग टैक्स द सेम वे. बैंक, एफडी, सेविंग्स बैंक अकाउंट, सम कैश ऑन हैंड एट होम. 50,000 रुपया कैश घर में रखो, 50,000 रुपया सेविंग्स बैंक में रखो, और एक फिक्स डिपॉजिट ऐसा रखो जो आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो. एक और इमरजेंसी फंड का सोर्स है योर क्रेडिट कार्ड. इफ यू हैव योर क्रेडिट कार्ड, then you can always use your credit card for that expense, and next 45 days में आपको credit card का payment चुकाना है. So credit card is also a source of emergency fund. राइट सर. सर, आजकल ये मेन मीडिया और सोशल मीडिया इन्वेस्टिंग बहुत चल रही है बिकॉज रिटेल का मैक्सिमम यही इंक्लिनेशन रहता है कि टीवी में कुछ टिप्स सुन लिए या सोशल मीडिया में सुन लिए. तो आई मीन कैसे कैसे डील करें बिकॉज देर इज टू मच ओवरलोड ऑफ, और एक जो आइडिया सुन के लगता है कि यार आप पीछे फोमो जिसको बोलते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए सर? You have to understand, अगर मेरा YouTube चैनल आप देखोगे और मैं बोलूंगा इक्विटी इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके, दैट इज ट्रू, बट दैट इज फॉर जनरल. इंडिविजुअली कल आपकी बहन की शादी है या आपकी बेटी की शादी है, आप उसके लिए पैसे रखे हो, आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए आप पैसे रखे हो, वो पैसा आप इक्विटी में डालोगे तो मरोगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ज्ञान मिलता है वो जेनेरिक ज्ञान है. आपको वो एप्लीकेबल है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ, ये जो मूंगफली है, मूंगफली में बहुत प्रोटीन है, करेक्ट, विच इज ट्रू. ग्राउंडनट्स हैव लॉट ऑफ प्रोटीन, बट आपको अगर प्रोटीन एलर्जी है तो हाउ विल आई नो दैट? आई विल नॉट नो दैट. तो मैं तो बोलूंगा प्रोटीन इज गुड फॉर एनर्जी, इट इज वर्थ हैविंग, बट whether it is suitable for you or no, that you have to decide. What I have said is correct, but whether it is applicable to you, आपको specifically you need an advisor. So you have to understand, market में हम जो भी बोलते हैं वो एक चीज. सेकंड, मार्केट का काम है डराना. तो आपको हेडलाइन मिलेगा, अंबानी लूजेस 1.4 crores in one day और 182 crores लास्ट वीक, ऐसा अगर आएगा तो आपको तो डर लगेगा, बट इसका कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज जो आपको डिनोमिनेटर में देखना है उनके पास कितना है. अगर उनके पास 3 लाख करोड़ है, उसमें 180 करोड़ जाता है, तो आप सोचिए ना, पुट द डिनोमिनेटर एंड देन सी एंड से व्हाट अ परसेंटेज इट इज लेस देन 0.5%, देन डोंट बॉदर. ये इतना लॉस तो हम सबको होता है. अगर मेरे पास 10 करोड़ है और एक दिन में 5 लाख का लॉस हुआ तो कितना हुआ वो?
right? So it's 0.5%. So that kind of a loss you should be able to bear. नहीं तो आपको मार्केट में तो होना ही नहीं चाहिए. So don't go by the headline and such scary headlines कि ये हो गया, वो हो गया, आगे क्या होगा. नॉर्मली जब हेडलाइन बहुत चढ़ा के बोलता है अभी तो देश कहीं और ऊपर जाने वाला है, चंद्रयान पे जाने वाला है, पूरा इकोनॉमी चंद्र पे जाने वाला है, दैट्स अ टाइम टू बी सेलिंग. एंड व्हेन दे से मार्केट की हालत बहुत खराब है, सब लोगों की हालत खराब है, फटी पड़ी है इंडस्ट्री की, देन इट्स अ टाइम टू बी बाइंग. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. मार्केट को जब आप पढ़ते हो आपको ये भी पढ़ना है कि कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल सम पीपल विल ऑलवेज बी फॉर मोदी, सम पीपल विल ऑलवेज बी अगेंस्ट मोदी. आपको तय करना है किस पे क्या भरोसा. सो सेम लाइक पॉलिटिक्स. In financial service also, you will find somebody who's always praising and somebody who's always criticizing. So you have to understand, and you have to understand ये जो knowledge है वो बहुत general है, specific नहीं है. Specific आपको चाहिए तो you should have an advisor. सर वेरी राइटली सेड, एडवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी अपने आप में चैलेंज हो जाता है टू फाइंड अ गुड एडवाइजर. तो एनीथिंग आई मीन कि क्या क्या व्हाट वी शुड लुक फॉर आई मीन इन अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, हाउ वन शुड गो अबाउट चूजिंग वन. Actually, there is no good financial advisor available for buying direct equity. Suppose I become your advisor for direct equity, how will you pay me? So उसका कोई तरीका ही नहीं है. So nobody is doing direct equity का advising. Mutual fund advisor मिल जाएगा आपको, but direct equity में you can only get a broker, and a broker technically is not supposed to advise. So if I become your advisor, how will you pay me? You can't pay me. So I will say, okay, मैं advice नहीं देता हूँ, मैं PMS चलाता हूँ. So then you have to come to me under PMS. So direct equity investing के लिए कोई advisor है ही नहीं. So where is the question of finding a good advisor? There is no concept of a good advisor in direct equity investing. And today we are doing a session on direct equity investing. So इसमें कोई आप ही को सीखना है. That's it. राइट सर. सर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी में नॉर्मली जो परसेप्शन मैंने देखा है रिटेल का, उनका ये रहता है कि भाई डायरेक्ट इक्विटी में दे कैन सी द प्राइस मूवमेंट, राइट, और उसमें एनएवीज. म्यूचुअल फंड में तो उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएट नहीं करता. तो ये ओपिनियन से आप अग्री करते हैं, और यू हैव आई मीन हाउ यू सी इट डिफरेंटली? For 99% of the people, mutual fund is a better option, right? बट लोगों को मजा डायरेक्ट इक्विटी में आता है. रोज लगता है अरे आज मैंने कुछ किया, आज मैंने So it's a way of keeping people engaged. So many doctors, many script writers and all in film industry, सब अपने अपने they like to have their own story of why they are dealing with equity, and so you can't help it. So people are enjoying it. करने दो. That is the actually, if you ask me, that's a problem. People are not making money. It's like real estate. पता है लास्ट 2005 से 2005 में, चलो 2007 2008 से जिन्होंने भी निवेश किया है रियल एस्टेट में, सबको लगता है पैसा कमाया. बट जब मैं उनको बोलता हूँ तुमने 90 लाख में जगह खरीदी, 1,30,00,000 में बेचा, तो उनको लगता है 40 लाख का प्रॉफिट है. बट जब इंडेक्सेशन के बाद मैं बोलता हूँ आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, वो खुश हो जाते हैं. बट यू शुड बी अनहैप्पी बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन. बट पीपल डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न्स इन रियल एस्टेट. सेम थिंग हैपेंस इवन इन इक्विटी. पीपल से मेरा पैसा डबल हो गया. बस 10 साल में तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी डबल होता है. तो कितने टाइम में डबल हुआ, कितना रिटर्न मिला, लोग वो कैलकुलेट करते ही नहीं है. सो व्हाट विल यू टेल सच पीपल? दे आर हैप्पी विद सम एक्टिविटी, दे आर लुकिंग फॉर एक्टिविटी, दे आर नॉट रियली लुकिंग फॉर रिटर्न. राइट सर. सर यू टोल्ड कि आप बॉटम्स अप इन्वेस्टर हैं और साल में 2-3 आइडियाज मिल जाएं, दैट इज गुड इनफ फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहता है? लाइक एनी सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू गेट सम आइडिया, और मे बी फ्रेंड नेटवर्क, और मे बी सोशल मीडिया, कहाँ से मतलब आइडियाज? एंड कुछ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया भी है कि सर आई मीन यू ऑब्वियसली 2-3 आइडियाज इस साल में पिक कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हैज टू बी इन प्लेस. When you introduced me, you said, right, I've been a broker.
सो ऑब्वियसली मेरे फोन बुक में all good, I mean, I could find 10, 20 big good investors. So just while talking to them, somebody will say, अब ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है. Then I start doing some research. आजकल तो मैं research भी नहीं करता. आई नो होम टू कॉल, राइट. सो कोई किसी को फोन करूंगा, बोलूंगा ये शेयर कैसा लगता है, तो बोलेगा मुझे नहीं पता, मेरा एक बच्चा उसमें रिसर्च कर रहा है, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ. फिर वो बच्चे से मैं थोड़ी देर बात करूंगा. वो बच्चा पूरा दिन वही काम करता है यार, उसको मेरे से ज्यादा मालूम होगा ही. देन ही विल टेल मी ये प्रमोटर ठीक नहीं लगता है, ये उसका अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम है, नोट्स ऑन अकाउंट्स पढ़ो. देन ही विल सेंड मी समथिंग. Based on all this only I decide. But today I don't do primary research. I don't go and meet promoters and all. वो जमाना खत्म हो गया. पहले long back I used to do. आजकल वो सब नहीं करता. So some kid can pick up and say, sir, Zomato तो अच्छा लगता है, 60 रुपए में कुछ बुरा नहीं है. Then I'll do some research. Then I'll start buying. But yeah, I have to largely believe that it's going to add value in it for a long time. या कोई टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, सो विल से बॉस आई ट्राई टू टेक ओवर दिस कंपनी बट बहुत स्ट्रांग है, उसका प्रमोटर के पास बहुत पैसा है, वो नहीं मानेगा, ये शेयर अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वो खरीदा. ऐसा दिस इज नॉट exactly research done by me, this is research done by somebody else, and then they say what is happening in the company etc, and they have to be outsiders because company कुछ भी बोलता तो मैं believe नहीं करता till I see the balance sheet. After I see the balance sheet, if I get information that's okay. But अगर मैंने बैलेंस शीट नहीं देखा और वो उस कंपनी के बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैं सुनता नहीं हूँ, बिकॉज वो बायस हो जाता है. सो आई फर्स्ट लुक एट द बैलेंस शीट, दैट्स माय ओनली सोर्स ऑफ डेटा. एंड देन आई पिक अप, अरे यार ये कंपनी तो यहाँ की है, चलो ये ढूंढते हैं. तो कोई तो ब्रोकर मिल जाएगा जो उस पर रिसर्च करता है, तो उसके कोई बच्चा होगा जो 22-25 साल का है जो उसमें रिसर्च कर रहा होगा, तो उससे मैं बात करूंगा, तो फिर आई एम एबल टू मेक अ डिसीजन. बट आई डोंट डू प्राइमरी रिसर्च, वो सब जमाना खत्म हो गया. Mr. Patil has asked one question. What kind of attributes and characteristics one should look for in a mutual fund manager and team and company to choose the fund of that AMC? नो आई थिंक वील डू अ सेपरेट सेशन फॉर म्यूचुअल फंड्स. इसमें सिर्फ इक्विटी करते हैं, और वो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत लंबा आंसर है. Right, sir. Will shortly. So, sir, I mean, in last 44 years, 2-3 big learnings. If I would request you to tell our attendees for direct investing, I mean, market में सबसे बड़ी learning आपकी क्या रही है, sir? सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि बेचने की जरूरत नहीं है तो मत बेचो. और यू नीड मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. सो इफ यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, दैट्स एन इंश्योरेंस की ये नौकरी गई तो और कोई नौकरी मिलेगी. इफ यू आर अ डॉक्टर, मेक श्योर दैट योर प्रैक्टिस इज गुड, सो that should be your primary source of income. Market cannot be a primary source of income till you build good wealth. After that it can become a source of income. And today I see many people leaving their profession and coming into F&O and trading and all that, and people have been making money for last 5-6 years because market में तेजी है. तो इन लोगों को लगता है तो मार्केट तो बहुत इजी है पैसा बनाने को, तो बहुत लोग बनाते हैं, and many people get wiped out also. So be careful. Have a full-time job or a full-time profession. If you market is not full, and or you come to the market as a full-time, then you get educated in this. You do CA, you do CFA. I mean, I'm not saying these are the only degrees. There are people with other degrees also. I was in Punjab recently, and I found a brilliant investor. He's an orthopedic surgeon. His wife is a gynecologist. So ऐसा नहीं है कि ये degrees चाहिए, but at least some basic understanding of balance sheet and all you need. You need patience. You need to believe that equities में पैसा बनेगा. You need to have patience. I mean, patience. I can say 10 times. Entry point is very important for you to hold on. If you have bought even Asian Paints or Nestle at a high price, and if the price falls, you will panic. So entry point being low is very useful. You will have to invest the dividend back into the same companies, because then you will build position, and you have to build position. Like there is no point, like for example recently मैंने BHL खरीदा, मैंने 25 में खरीदा, 50 में खरीदा, 70 में खरीदा, और शायद 80 में भी खरीदा, और फिर मैंने 120 में बेचा, और फिर वो नेक्स्ट डे 135 हो गया.
फिर वो 140 हो गया. टू मी डजेंट मैटर. मैंने आई हैव अक्यूमुलेटेड इट वेरियस स्टेजेस एंड आई विल सेल इट वेरियस स्टेजेस. लास्ट शेयर शायद मैं 300 में बेच पाऊँ, दैट्स फाइन बाय मी. ऐसा नहीं कि मैं 30 में सब खरीद लूंगा और 300 में ही सब बेचूंगा. दैट डजंट हैपन. सो यू कीप बाइंग एंड देन यू कीप सेलिंग एट सम स्टेज, और यू से दैट्स इनफ, मेरे मुझे और खरीदना नहीं है, मुझे तो अभी सिर्फ बेचना है. फॉर एग्जांपल, आई बॉट टाटा पावर एट 25, sorry, at 30. I bought at 50, I bought at 60, I bought at 70, then I sold at 270. अब शायद उससे भी ऊपर है भाव. इट डजेंट मैटर, यू नो. सो आप स्लोली अक्यूमुलेट करो और स्लोली बेचो. ऐसे नहीं कि मैंने 30 रुपए में 100 शेयर खरीदा तो 50 रुपए में और नहीं खरीदूंगा और फिर ये सब मैं 150 में बेच दूंगा. दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, राइट. 30 में लिया, 150 में बेच दिया, फिर 150 से वो हो गया 270, 280. So then you have to decide what to do. So you keep buying and you keep selling. You keep trading, but also you build your portfolio. So if you have, if you were lucky at 30, suppose you bought 50,000 shares. ऐसा नहीं कि पूरा 50,000 शेयर आप 300 तक पकड़ के रखो, बीच में थोड़ा बेचो, फिर नीचे आएगा तो और खरीदो. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज आर यूजफुल. You will never end up buying everything at the same price. You will never get the bottom and the top. So sometimes you will get the bottom and the top, but that's the rarity. हमेशा ऐसा नहीं होता है. ऐसा कभी बीच बीच में हो गया तो लक है. एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लक. बहुत इसमें लक भी चाहिए. लक ये चाहिए कि एग्जैक्टली इन अ बैड टाइम यू शुड नॉट रिक्वायर मनी. सो लेट्स इमेजिन मार्च 2020 में अगर मुझे पैसे की जरूरत होती, I would have sold, right? March 2020 was a fantastic time to be buying, but I would have sold because I needed money. So for emergency, you should have money somewhere. You should have medical insurance. You should have all those things. You should have a नौकरी. अगर वो नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो घर खर्च के लिए निकालोगे. Then for buying assets, you can plan and remove, but don't remove just because अभी मुझे कार खरीदनी है, मैं मार्केट के इसमें से निकालूंगा. वो नहीं होनी चाहिए. बट हाँ, मैंने ये शेयर खरीदा 100 रुपए में, आज वो 200 हो गया, मेरा पेट भर गया तो थोड़ा 15 लाख का प्रॉफिट बुक कर लूँ, 15 लाख का गाड़ी ले लूँ. दैट यू कैन डू. And sir, in the recent past, PSU companies or government companies, and they did very well. So, do you feel structural change here, or it's like the what we say B2G remains it used to be? Are you telling me because Mr. Modi has come, all the PSUs have become honest? I don't think so. मैंने BHEL 2007 में 305 रुपए में बेचा और वही BHEL मैंने अभी 25 रुपए में खरीदा 2020 में. अब उस आदमी की सोचो जिसने मुझसे 304 में BHEL खरीदा, उसने वो कभी पैसा नहीं बनाने वाला है, राइट. सो PSU में बहुत पैसा डालना इज नॉट मच ऑफ अक्लमंदी. बट यस, आफ्टर मोदी केम in 2019, okay, not 2014, PSUs have done well. Their cash flows have improved, etc. But ये luck है. I will not keep on putting money in PSU. Right now, I'm in a mood to sell PSU rather than buy PSU. I mean, 700, 800, 900 में when we bought Hindustan Aeronautics, it looked like a good buy. बट 4,000 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेने की मुझ में तो ताकत नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं है लेने की. अब मैं बेचूंगा, लूंगा नहीं. हाँ, बट कोई और PSU हो सकता है विच इज वर्थ बाइंग. बट मेरा ध्यान ऐसा, एंड आई डोंट लुक एट इट एज अ PSU, आई जस्ट लुक एट इट एज अ गुड कंपनी एंड अ बैड कंपनी. आई थिंक SBI is a good bank. I don't worry whether it's a PSU bank. So I have HDFC Bank, I have ICICI Bank, and I have SBI. Exactly in that order of, and I have Yes Bank, I have Equitas. So ये सब है मेरे पास. But my quantity highest, value highest would be HDFC Bank, then ICICI Bank, then SBI, then Equitas, and then Yes Bank or something like that. So that's how it will be. But I think PSUs are well priced, if not fully priced. Right, sir. So, sir, and if you would like to tell about your book, suggest few more books which can help our audience. Related to financial markets or maybe non-financial market will also do good books suggestion. Okay, do one thing. Go to my blog, which is subramani.com.
बहुत दिनों से मैंने उसमें लिखा नहीं है। देयर यू गो एंड सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक्स टू रीड, बिकॉज ये जो सवाल आपने पूछा ना वो आधे घंटे का जवाब है, बहुत लंबा जवाब है। तो वहां पे बुक्स हैं, वो देख लो। सॉरी। Sure, sir. We'll keep more questions for our next session. You said, do we have more time or shall we wrap up for the day, sir? You said till 8 p.m. Another Sir. 5-10 minutes is okay. Yeah. Okay. So, sir, the macro events which happen, does that bother your investing? You have a sense on those, or it's like you don't care much, barring some events like COVID or something kind of that. Sir, I care, but I don't understand. इटली में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, यार अपने शहर में क्या हो रहा है समझने को 40 साल लगा। तो फिर नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन मैक्रो। आई कंप्लीटली इग्नोर। आई जस्ट आस्क माई सेल्फ, विल पीपल कंटिन्यू टू ब्रश देयर टीथ, विल पीपल यूज शैम्पू, विल पीपल फ्लाई, विल पीपल बाय मारुति कार्स, विल पीपल यूज मेक माई ट्रिप? If that answer doesn't change, my investment philosophy doesn't change. ये मैक्रो वैक्रो से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन द लॉन्ग रन, बट लोगों को अच्छा लगता है उसके बारे में बात करने को। तो इवन इफ यू सी माई वीडियोस, आई नेवर टॉक मैक्रो। आई जस्ट टॉक अबाउट योर बिहेवियर। सपोज यू आर यंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम यू आर सेविंग। इसमें कितना रिटर्न मिलता है नॉट इम्पॉर्टेंट टिल योर 45-50 व्हेन यू हैव अ कॉर्पस। अभी 1 लाख के कॉर्पस में 5% मिले या 9% मिले, क्या बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, 10 करोड़ के कॉर्पस में क्या 10% और 12% में 2% का फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। 20 लाख का फर्क पड़ता है। सो इनिशियली यू शुड बी वरीड व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम यू आर सेविंग, एंड बाय द टाइम यू बिल्ड अ कॉर्पस देन यू शुड बी वरीड एज टू मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो पहले, इनफैक्ट आई कीप सेइंग, अगर आपका लॉसेस होना है तो पहले हो जाए तो अच्छी है, बिकॉज आपके पास कॉर्पस कम है। 20% लॉस हो गया लेकिन कॉर्पस 1 लाख रुपया था, तो ठीक है ना यार, 20,000 रुपया, दैट इज अफोर्डेबल। बट आफ्टर यू क्रिएट अ बिग कॉर्पस देन यू कांट अफोर्ड टू लूज, देन योर एसेट एलोकेशन एंड ऑल दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो दैट इज दैट्स वन थिंग व्हिच इज। And sir, like, which is your longest holding till date in your portfolio? There is a share which my father bought called Hindalco. He bought it in 1957, 1957. So which means it is what, 43 plus 23, right? Yeah, 43 plus 23. 66 years of holding that share. Also understand उसमें बीच में Indira Gandhi had put a cap that you cannot declare dividend. She had put a control on aluminium prices. वो सब था, but still I was just checking out and मुझे कुछ dividend छोड़ के 13% growth मिला है, which is not bad because 13% over 67 years, that is N is more important than R, right? In the compounding formula. तो इतनी लंबी समय के लिए आप रहोगे और आपको 13% मिलता है तो it's not bad at all. So, sir, like, जो Black Swan event रहे, be it 2008 or COVID or maybe prior to that. So, I mean, obviously, when one experience one Black Swan event and after that market recovers, we get a sense that these are part and parcel of the market. But how had been your experience with these crashes? I mean, actually, anybody who has been in the market since 2002, okay, or 2002, does not know what is a bear market. bear market वो था जो 1996 से 2002 तक मार्केट कहीं नहीं गया, उतनी और 1993 when market came down 46%. I don't know how many people will be able to live through such a big fall. बिकॉज आज मैं देखता हूँ तो मेरे ब्रोकर के वहां मैं देखता हूँ पोजीशन बहुत लीवरेज्ड है, F&O ऑन मार्जिन एंड ऑल दैट। सो ये लोगों में ताकत नहीं है कि मार्केट 10% फॉल भी करे तो ये लोग साफ हो जाएंगे। सो 1993 में मार्केट गिरा था 46%, और 1996 टू 2001, एटलीस्ट 2001 2002, 6-7 साल मार्केट कहीं नहीं गया। When market goes nowhere and you're a broker, your phone just doesn't ring. कोई धंधा नहीं होता है।
सो दोस आर डिफिकल्ट पीरियड्स टू लिव थ्रू। बाद में तो आजकल तो सबको लगता है अरे यार मंदी होगी तो 15 दिन की होगी, 1 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, तब तक मार्केट रिकवर करेगा। अगर मार्केट में आप सोचो, आज अगर मार्केट लेट्स से इट इज 20,000 ऑन द निफ्टी, मार्केट 20,000, 19,000, 18,000, 17,000 जाके 17,000 में रहता है 3 साल, देन आपकी क्या हालत होगी? दैट इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। बट इफ दे आर ट्रेडर्स दे विल फाइंड सम एक्सक्यूज, नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया, अभी वापस मोदी जी आ जाएंगे, you know, all those things. People are, I don't think people understand what it is to have a 6 year bear market. I don't think the government has the guts to have a 6 year bear market. Government कुछ तो पैसा पंप करके उसको चढ़ा देगी वापस. So I don't know, these kind of things will happen. So first of all, write down where you are spending your money. Second, write down how you are investing your money. अपना एक investment diary बनाओ, फिर पता चलेगा 50% of mutual funds are giving better returns than what you're getting on your own. अगर वो सच है तो म्यूचुअल फंड में जाके निवेश करो। अगर वो सच नहीं है and you're able to make money, then try to make this your profession. As a part-time guy, you will make money, but then I do not know how much time you will start giving for it. आंसर इसमें भी एक ओपिनियन म्यूचुअल फंड में भी रहता है कि डायरेक्ट वे में इन्वेस्ट करना चाहिए और वन शुड गो थ्रू अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो आई मीन व्हाट शुड बी, हमें क्या करना चाहिए? See, again, it is very difficult. मुझे एडवाइजर की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं किसी को एडवाइजर की जरूरत नहीं है। So this is not something which can be said very generally. I know people who go direct who have made a mess of their portfolios. I know people who have gone through an advisor who have done very badly. So I see all kinds of people. So I don't think ये वो सवाल है जिसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है, आप सब कर सकते हो, फिर देखो कि एडवाइजर के थ्रू जाने का फायदा क्या है। और बाय द टाइम यू नो हाउ टू सेलेक्ट अ गुड एडवाइजर, मे बी यू नो हाउ टू इन्वेस्ट, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग अ मेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट without an advisor, and I've seen people making a mess of their investment having a bank as an advisor. So सब कुछ मैंने देखा है, तो मैं कोई इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ। किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है ये सब चीज़ों में। अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, सीखने की क्षमता है, देन यस यू कैन बी ऑन योर ओन। बट अगर नहीं है, अगर आपको if you think it is important to talk to your family and all that on the weekend, then I think you should need an advisor. एंड सर दीज डेज ट्रेंड, ऑल्दो पहले भी रहा होगा, ये ट्रेंड चल रहा है कि जो थोड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिनका इंडस्ट्री में अच्छा नाम है, पीपल ट्राई टू फॉलो देम ब्लाइंडली। तो इसमें क्या चैलेंजेस और क्या क्या रिस्क आप देखते हैं सर? अगर मैं एक अच्छा इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो शुक्रवार को देखूं और वो देख के कॉपी करूं और वो सोमवार को बेच देता है, उसका कोई जवाबदारी होता है क्या मुझे फोन करके बताने की कि यार मैंने जोमेटो तो बेच दिया, मैंने इंडिगो तो ज्यादा पोजीशन लिया? मुझे कैसे पता चलेगा उसने क्या लिया? सोमवार को उसने क्या किया वो तो पता नहीं है। हाँ, अगर आप उनसे बात करते हो और वो आपको बोलता है ये अच्छा लगता है ये ले लो, तो अलग बात है। बट बाहर से आप उसको कैसे कॉपी करोगे? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसे कॉपी करोगे। आप वो बेच देगा तो आपको नहीं बताएगा, या आप लेट बताएगा, तो आप क्या करोगे? राइट सर। और सर जैसे डायरेक्ट इक्विटी में कई बार ये होता है कि भाई इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है या फिर उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो दे नॉर्मली गो फॉर गुड रिसर्च, रिसर्च इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो एक आई मीन कहीं से सर रिसर्च को सब्सक्राइब करते हैं, तो व्हाट कुड बी पोटेंशियली बी द बेस्ट वे टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट? Again, research is not done for you, right? Research is just done generally. General research may not be very useful for you, so it has to be specific for you. Because see, if I'm your advisor, I should be able to tell you ये शेयर खरीदो, इतना खरीदो, ये सोच के खरीदो कि तुम्हारी बेटी की शादी में यूज होने वाली है, 10 साल का व्यू लो, वो सब चाहिए ना। मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, बट कितना वेटेज लोगे पोर्टफोलियो में, उसको कैसे वेट करोगे? अच्छा, आज कितना लोगे, कल कितना लोगे, कितने प्राइस में बेचोगे? वो कुछ कुछ नहीं बोलता ना। somebody tells you the share is a good buy at 100,
Does it mean it's a good sell at 110, or should you wait for it to be 200, or should you be buying even at 200 because you have got proof that हाँ everybody thinks it's a good share, everybody is buying. तो मैं कितना खरीदूं कब बेचूं, वो सब कौन बोलेगा आपको? आपको सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट मिलेगा। मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट दे सकता हूं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज अ गुड शेयर। इज इट वर्थ बाइंग एट दिस प्राइस? इज इट, हाउ लॉन्ग विल यू होल्ड इट? मैंने सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहले खरीदा था 1988 में, 1988 में, और अभी भी है मेरे पास। मैं बीच बीच में और लेता हूँ, बेचता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बट आज के भाव में लेने लायक है क्या, और 20 साल रखने लायक है क्या? और वो सब आपको कोई रिसर्च वाला नहीं बता सकता है। उसका काम नहीं है। उसका काम यही है कि कंपनी ढूंढे और बोले यार ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। फिर आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको दूसरा कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो साइजिंग, व्हेन टू सेल, ये सब अगर आपको पता नहीं है तो देन म्यूचुअल फंड एसआईपी मेक्स मोर सेंस, नो? Right. और सर जैसे आई मीन खैर आजकल तो रिसर्च में बाय सेल होल्ड का भी आता रहता है, बट अगेन that defeats the idea of keeping the shares for long. But again, if some good research house is giving that, तो उसके basis पे sir we are in an era of disruption. So don't you think like thinking of 5-10 years for a particular company is a challenging thing? Sorry, I didn't hear it properly because So कुछ we difference we हुआ। are in an era of disruption, right? So taking a view of 5-10 years for a company, don't you think that is challenging, and there would be very few companies falling in that bucket maybe? मैं एक चीज बोलूं, आजकल लोग बहुत रिसर्च वगैरह करते हैं और काम कम करते हैं। आई थिंक वी टेरिबली अंडर एस्टिमेट our understanding in the long run and terribly overestimate our understanding in the short run. आप, I don't know what's your age, but last 20 years you see everybody around you, their standard of living must have only gone up. छोटी कार से बड़ी कार, छोटे घर से बड़े घर, फॉरेन वेकेशन, मोर एक्सपेंसिव फोन्स, दैट हैज हैपेंड। तो ये कैसे हुआ यार? People have bought more cement, more steel, more tiles, more housing finance, more banking, more hospitals, more all those things, more cars, more airline travel, all that has happened, right? So in the long run, Maruti has made money, Sun Pharma has made money, HDFC Bank has made money, HDFC Limited has made money, Ultratech has made money, Tata Steel, JSW have made money, Tata Power has made money. This is fairly obvious. अभी आप देखोगे कि मैं नहीं यार ये सब तो ठीक है, पुराने कंपनी से मुझे नया कुछ चाहिए, ठीक है नया ले लो, बट ये नया डिसरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आई मीन डिसरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो फैड बंद हो सकता है। जस्ट इमेजिन इफ फेसबुक वेयर लिस्टेड इन इंडिया, आजकल के बच्चे आई इंक्लूड पीपल अराउंड 30 years एंड बिलो ऑल्सो, डोंट गो टू फेसबुक, इट दे आर मोर ऑन इंस्टा, राइट? सो फेसबुक नहीं चला, इंस्टा चल रहा है, बट फेसबुक में अभी भी एड्स आते हैं। गूगल के एड्स रेवेन्यू इज स्टिल वेरी हाई। गूगल हैज केप्ट पेस विद टेक्नोलॉजी बेटर देन फेसबुक, right? So how difficult is it going to be, and when, at what stage are you going to say यार ये तो कंपनी पैसा, अमेजोन तो पैसा ही नहीं बना रही है, मैं तो शेयर खरीदूंगा ही नहीं, right? It's going to be very difficult to know which company will get disrupted and all, but I believe Head and Shoulders and Clinic and Colgate and all will continue to sell. तो वो पुराने हैं, उसका पी कम होगा, वो तो पक्का कम होगा, बट बंद नहीं होगा। whereas anything new might get hurt very badly. So it's very difficult, I agree. But whenever, see, when I bought a Colgate in 1977 or 78, it is not as though मैंने सोचा कि ये 40 साल रखूंगा। मैंने ये हर 6 महीने देखा कंपनी कैसा कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड, यू डोंट डिसाइड दैट आज मैंने खरीदा जोमेटो में ये 50 साल रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू कीप लुकिंग, मार्केट शेयर बढ़ रहा है इसका, the value that is delivering बढ़ रहा है, margins improving, then yeah, it's worth buying. Otherwise don't buy. At some stage you feel नहीं यार ये तो फेंक रहा है, कुछ नहीं हो रहा, चलो बेच दो।
ऐसे नहीं कि आप 40 साल के लिए आज खरीद रहे हो, आज खरीद रहे हो, बस अच्छा लगा तो रखोगे, फिर एवरी क्वार्टर यू विल सी, देन एवरी 6 months you will see, then every year you will see, then unless there is a change in management, there is no reason why I will say sell off an HDFC Limited. Can it go down? Of course it can go down. Does it bother me? No, it does not bother me, because मेरा starting point तो 10 रुपया है. So I will keep buying, I will keep selling, I will say okay इसका तो market share और बढ़ रहा है तो और खरीदूं. I may buy yes bank if the market share keeps improving. Right, so it's difficult to say, and you don't take long term decisions, you take short term decisions, but you some like for example अगर 40 साल मैंने एक शेयर रखा है तो it means 160 times I have decided कि बेचने लायक नहीं है. Don't think you buy something and say ये मैं 40 साल हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता है. राइट सर. एंड सर मार्केट में रहते हैं तो बहुत तरह की बाइसेस हमारे साथ रहती हैं, तो ऑब्वियसली लाइक एक्सपीरियंस के साथ वो थोड़ा बहुत तो उनको वी कंट्रोल बट दे रिमेन, तो उनको सर डील करने का वैसे आपको क्या लगता है कि आपके अनुभव से कि क्या बेस्ट वे है अपनी बाइसेस से डील करने? बायस होते हैं और बायस अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑल बायसेस आर बैड. फॉर एग्जांपल आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस इन्वेस्टिंग इन कंपनीज आउट फ्रॉम हैदराबाद. ये मैंने बहुत से मेरे वीडियोस में भी बोले हैं. तो मैं अगर हैदराबाद की कंपनी आती है तो मैं नहीं निवेश करता. आप बोल सकते हो ये बायस है, बट मैं नहीं करता. राइट, हैव आई मिस्ड, मे बी आई मिस्ड 2-3 कंपनीज, बट आई हैव आल्सो बीन सेव्ड फ्रॉम सत्यम एंड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक एंड शिट लाइक दैट. तो ये मेरा बायस है. सो मैं देखता हूँ कौन से कम्युनिटी का है, ऑडिटर कहाँ का है, क्या है, तो आई एम बायस. So I will always be biased. I will always think that Colgate will do better than PNG. मेरे पास Colgate भी है, PNG भी है, but Colgate ज़्यादा है. So I am not worried too much about biases. Yes, I love to take contrarian bets when the markets are down. I buy. So yeah, sometimes you catch yourself getting into a bias and saying, okay, ये मेरा bias है और ये हो रहा है. The way to get out of a bias situation is get your portfolio reviewed by a friend who will say, यार ये क्यों खरीदा, ये तो गंदा शेयर है, मत खरीद, ये प्रमोटर को मैं जानता हूँ. Then you get rid of the share. So मेरा पोर्टफोलियो 2-3 मेरे दोस्तों को दिखाता रहता हूँ, तो that's the way I reduce my bias. Fair point, sir. Let me see, sir, if we have any pending question in the comments, and then we can take a call for concluding the session. There is one question on do you think CAGR is important or not? That is the small question from one of the participants. CAGR is the most important reason. I mean IRR बोलो या CAGR बोलो, depending on whether you are investing more and more money. अगर आपका CAGR PPF या से बैंक फंड से कम है तो क्यों निवेश कर रहे हो? It's the most important thing. You have to calculate on a regular basis. Answer. One question is around expectation building. So how we should build our expectations in the market? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% रिटर्न दे रहा है तो आपको डेट फंड 8 देगा और इक्विटी फंड 9.5-10 देगा. उससे ज्यादा जब भी मिलता है आपका लक है. Right, sir. And this question is stock specific. That's up to you. You want to answer or not? He's asking your rationale for investing in Yes Bank. My rationale is if HDFC and State Bank of India could have bought this at 12 rupees, तो मेरे को 9.5 रुपए में लेने में कोई रिस्क नहीं दिखा, तो मैंने 9.5 और 10 रुपए के बीच में लिया है. और अभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. आई एम सिटिंग एट लीस्ट 100% प्रॉफिट्स, बट आई स्टार्ट सेलिंग ओनली एट 40-45. आई एम नॉट इन अ हरी टू सेल, बट मैं अभी शायद खरीदूंगा नहीं. मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया, पेट भर गया है मेरा. And sir, what has been your round stories? So do you think the turnaround story investing works, or it's like fail most of the time? How had been your experience with it? Turnaround stories, depending on at what level you pick up, it works. But you have to know who is turning it around, whether it will really turn around, वो सब पता होना चाहिए. ऐसे ही कई मार्केट में पढ़ लिया कि टर्न अराउंड है तो उससे नहीं चलता. It has to be a genuine turnaround. Of course it works. Look at CG Power, right? CG Power, right? I got the share at 46, 47, 53. At 53 I felt it was fully priced. Now it is 440.
It's just a turnaround. Just change of management, right? From Crompton Greaves, it went to Murugappa Group. Shanti Gears. I entered at 67 when there was change of management. From 67, I think it's about 500 plus. So turnaround works, change of management works. You should know who is taking it and whether they are capable of running it. Some people are capable of running it, some people are not capable. So अगर नया मैनेजमेंट पे भरोसा है तो लेना चाहिए. अगर बिजनेस में भी भरोसा होना चाहिए और नया मैनेजमेंट पे भरोसा होना चाहिए तो yes, you should buy. And sir, few pointers on identifying red flags so that we can be like saved from making bad investments. या अगर एमडी का फोटो पेज 3 में आने लगे, if there is news item that the company is losing market share, that is all visible. Every quarter you have to see what is happening. So every quarter I see what is happening in say a Patanjali and say, oh boss, iska to market share बढ़ रहा है. Then something like that and say, okay, now iska track karo, एक दिन ये लेने लायक हो जाएगा. So I bought at 940, 950. I sold at 1300. So I've still not made up my mind, but I've traded a lot in Patanjali. Right, sir. Sir, I picked all